We have some breaking inputs coming in as the crisis in West Asia is deepening. Prime Minister Narendra Modi chaired a top-level meeting on the West Asia crisis. Cabinet Committee on Security meet was held. The Prime Minister chaired this meeting. Discussions were held on the crisis that is deepening in West Asia and the possible impact of it on India was discussed as well. Senior mantris and the officials were present during the meeting. The meeting was about how India will be impacted, and at the moment India of course is very closely monitoring the entire situation unfolding in West Asia. Let's go across to Srinjoy Chaudhary for more on this. Srinjoy, important meeting there, the CCS meet chaired by Prime Minister Narendra Modi. India of course is very closely monitoring the situation unfolding in West Asia. Yes, the CCS really comprises the Prime Minister himself, the Home Minister, the Finance Minister, the External Affairs Minister, the Defense Minister, and the National Security Advisor, that is Ajit Doval. Now, this meeting naturally takes a stock of the situation in West Asia. There are really two very important reasons why it will affect India. First of all, there are approximately 9 million Indians in that area, in West Asia, in the Gulf, working there, earning a living. All right. Srinjoy, please stay on with us. We also have Amit Kumar joining us on the broadcast. Amit, CCS meeting में West Asia में जो crisis है उस पर चर्चा और मुख्य बिंदु क्या रहे? ट्रेड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर के खासतौर पर चिंता जताई जा रही है कि भारत पर इसका असर पड़ सकता है। जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से वहां पे लड़ाई बढ़ती जा रही है, एक तरह से एक के बाद एक दूसरी कंट्री इसमें इन्वॉल्व हो रही है, लेबनान, ईरान तमाम, तो ऐसे में वहां पर अगर उसका वो बढ़ता है तो उस पर भारत का क्या असर होगा, ये चिंता की बात है। दूसरी बात, भारत अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रहा है। इजराइल में नेतन्याहू से भी उन्होंने बात की, प्रधानमंत्री मोदी ने, कि उसको वहां पर शांति कैसे बहाली हो, बातचीत कैसे शुरू हो, इन तमाम चीजों पर नजर बनी हुई, क्योंकि उसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर तेल की कीमत बढ़ने जा रही है। तो अगर वो बढ़ता है, वहां के हालात बिगड़ते हैं, तो तेल की कीमत बढ़ेगी। तेल की कीमत बढ़ेगा तो सीधा असर तमाम देशों पर होगा, और उसमें भारत भी है, क्योंकि बड़ी जो तादाद में तेल जो है उधर से आता है। तो ऐसे में इस पूरे सिनारियो को लेकर चर्चा हुई सीसीएस की बैठक में। कल जब शाम को कैबिनेट की बैठक हुई, उससे ठीक पहले सीसीएस की बैठक थी, जिसमें सीसीएस के तमाम मेंबर्स थे और इसके अलावा अधिकारी मौजूद थे। वहां के हालात की समीक्षा की और भारत पर जो असर पड़ता है तो उससे निपटने के लिए हमको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, उसको भी लेकर वहां पर चर्चाएं हुई है। जी, भारत का जहां तक स्टैंड है, डायलॉग और डिप्लोमेसी, भारत इसी पर लगातार स्ट्रेस कर रहा है, एम्फेसिस इसी बात पर है। क्या उसको लेकर के भी चर्चा हुई है इस मीटिंग में? निश्चित तौर पर देखिए, भारत ने अपना स्टैंड शुरू से रखा है कि इस पूरे मामले में किसी भी विवाद में बातचीत ही इकलौता रास्ता है जहां पर विवाद को सुलझाया जा सकता है। और युद्ध अब वो वक्त नहीं रहा जब युद्ध के जरिए किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है। और इसीलिए आप देखिए, चाहे यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की बात हो या फिर इजराइल और जो मिडिल ईस्ट की बात हो रही है, वहां पर जिस तरह से हालात बने हैं, भारत वहां पर एक सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार इस बारे में बात भी की है। नेतन्याहू से कुछ दिन पहले ही उन्होंने बात की कि वहां पर किस तरह से चीजों को बेहतर किया जा सके इसको लेकर। और यही वजह है कि ये जो अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो उसका असर सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे देश पर होगा, आम लोगों पर इसका असर पड़ेगा। और इसीलिए भारत इस बात को पक्षधर रहा है और इसीलिए जो कल बैठक हुई सीसीएस से, वो तमाम हालात की न सिर्फ समीक्षा की गई, अगर भारत पर उसका असर पड़ता है तो भारत को उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से हालात को करना चाहिए, उसके लिए बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम जो वहां पर सीसीएस की बैठक थी उसमें एक तरह से ब्रीफिंग ली है इस पूरे मामले पर, और उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं कि इसके लिए हमको किस तरह से तैयार रहना है इन हालात को निपटने के लिए। All right, Amit, thank you very much for getting us the inputs. We also have Srinjoy Chaudhary on the broadcast with us. Srinjoy, like you were earlier explaining, the constitution of the CCS wall were present, and the significant impact of what's happening in West Asia on India was discussed during this meeting. Yeah, there are really two things that were discussed. One is that if you look at the economic aspects of it, first of all, every time the price of one barrel of crude, Brent crude, goes up by $1, it affects the Indian economy hugely by several hundred crores. So if that happens, and if there is a huge rise in oil prices, it will affect the Indian economy. It will affect the Indian economy and it could lead to serious inflation. That's the first problem that this country will have to face. The second, of course, equally important,
is the fact that there are 9 million Indians who live in the Gulf, who work in the Gulf, and send money back home, foreign exchange, precious foreign exchange back home. Again, their lives are an issue for India. It's an enormous issue that 9 million people work in the area, including in Iran, including in Lebanon, including in Israel, increasingly. That is an issue that has to be kept in mind. So both issues become very important. And besides, if you look at a more strategic way of thinking, then India can play a role. India has been a long-time civilizational ally of Iran, a friend of Iran. The other, of course, Iran apart. Israel and India have a strong strategic partnership. So India can play a role, is what S. Jaishankar, the External Affairs Minister, has suggested recently. All right. So, very significant discussion in terms of what the impact could be on India of this crisis, which is deepening in West Asia. And like Srinjoy and Amit were explaining to us, trade and the supply of petroleum products, the impact on that was discussed as well. The economic aspect was discussed as well. What we've seen all through, whether it was the Russia-Ukraine war or whether it's the situation escalating between Israel and Iran, the war between Israel and Hamas, India is very clear when it comes to terrorist attacks. India has condemned it. But when it comes to relations with both the nations, very, very fine balancing act by India, condemning the loss of lives when it comes to innocent individuals, also reminding the countries the significant impact it could have on the entire region. Oh, yes, of course. As Jaishankar has made 2 points. He has said we don't like terrorism and we condemn it unequivocally. About that, there is no doubt. And he was referring to the 7th October attacks by Hamas on Israelis, which included led to the deaths of women and children and so on. Now, he has also said that there are humanitarian laws in the world. When he says that, he means the attack in Gaza. It means the death of 50,000 people, and again, women and children. So India has a very finely nuanced position of Absolutely. So just stay on with us. We have